Okay, good morning students. Welcome back to the online sessions of Science Class 8. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I request you to you don't go outside your homes. Also avoid to go into the crowded places, and if it should be necessary and have to go outside your homes, use the face mask covers. Always be take sanitizers with you and always wash your hands in a specific time of interval. Now students, today we're discussing about the new topic of your syllabus, that is about the conservations of plants and animals. So that is the conservations. Already we have discussing about in the previous terms, like we're discussing about how we can be implementation and conserve the fossil fuels. In the previous sections we have already discussion. Now conservation is should be minimize the use. How we can be safe, this is called as the conservations. So generally we also seen into like some of the existable resources and some of the inexhaustible natural resources, in which if we are using more and more this type of resources which are limited in quantity, which will be exhausted into the nearer futures, and if that type of the resources which should be not been exhaustible by the use of the humans, that is called inexhaustible, like sunlight is there, air is there, land is there, these are kind of the non-existable resources. So that is a generally forms if we have to be implement how we can be conserve these things. So also this type of conservations also we have to be implemented into the plants and animals, because if we seen about discussion about the biodiversity, if we discussing about the biodiversity is what specifically we consider that a large variety of plants, animals and the microorganisms which all are present into this form of planet of earth. These are the all this type of the organisms which is generally available into the specific form onto the planet of the earth. So these all are the formations of the living natural resources. These generally considered as a living nature resources. In addition for that, if this type of resources, maybe if consider like air is there, water is there, land is there, sun energy is there, these are the energies are called as the non-living resources. Okay, so these are the generally forms all this type of the living organisms, maybe like the humans, which is dependent onto this living and non-living resources, दोनों पे dependent होते हैं, like we are also be. So between of these two, it generally, if you seen that while increasing of human populations, while the population that can be increased in the recent of times, it may be use this type of resources, and these are the resources are generally having in a limited form. So what we have to do to conserve this type of resources if they have not been implemented? So we have to be preserve the quality of environment. Also we have to be continuously making the useful of this, like some of the plants is there, animals is there, materials is there, which we have to be continuously focusing there. The substances which is available like in a found into the nature, different type of substances or the earth that can be seen as a part of the human beings. So the natural resources which generally available from the nature, and the humans that can be use these resources as a form of their economical benefits as well as making their life luxurious. These are generally a part of the implementation that is called as a natural resources. So in which different type of organisms like plants, animals, different creatures which are living in a specific areas of the diversity, that is generally called as a biodiversity. So biodiversity that refers to the variety of the living organisms, different type of variety of living organisms, they have to be live onto the specific area of earth. So it may be generally is considered like plants is there, animals is there, natural resources there, plants is there. So these all are having to be implemented and living in a specific formation. So biodiversity is the uniformly globes where all this type of these others which can be related, in which one of the things that is considered as a forest. Forest is the reason where biodiversity is more. So while I've seen implementation on the textbook, we already having to be discussing in that. Say there is a one formation is given, like formations they are generally implementations about why we can do implementation for that. So if we have to be seen like we are eagerly more and more visited to type this type of the national resources, or maybe going into the national park sanctuaries that have to be visited. So some other facts we have to be already discussing or seen or maybe heard about the different type of the as well as the biodiversity, like
like Kaziranga National Park is there, as well as the Lucas Wildlife Sanctuary is there, Great Nicobar Biosphere Reserve is there, Tiger reservoirs are there, specifically formation like different type of the animals which have been to availability onto the different areas. So if we see that, okay, what is the main purpose to making this type of the natural resources or wildlife the natural resources, or maybe it's called as a biosphere reserves, because if you seen that, okay, different type of animals and plants have to be a specific areas in which they have to live freely without any kind of disturbance of the human activities. So this type of the resources may be implemented for their implementation of their biodiversity formation. So if we consider this type of the resources, the natural parks, sanctuaries and the biosphere reservoirs, these are generally having to be implementation as one of the resources where this type of animals which can be easily live and they can be implementation. So while the activities of human populations, if we see that jitna zyada population increase hota hai, they mostly acquire the earth, because the humans mostly dependent on to the land to making their specific activities, while creating the industries, while creating their homes, while making the roads, dams, etc. So different type of the variety of plants and animals which is exist on the earth, which have the specific characteristics and which are the specific their uses. So great variety of plants and animals, if you see onto the existent onto the earth, they are in a different forms of biodiversity. So these all are the plants and animals which also be well-being essential or well-being to survival of any mankind's of human. So today we're discussing about that humans mostly cut the trees for making their life luxurious and making some of the industries and the making the dams, roads, etc. So they generally cut the trees, yani they are generally making the deforestation. So the measure of this formation, that is also caused losses of biodiversity. Okay, so deforestation is generally one of the effect which create the cause of biodiversity. It mean me increase the human population or increase the specific form of urbanization, populations of air, water, habitat of destruction, hunting and killing of the animals. These are the general activities which generally create the causes of the biodiversity. So like we seen that deforestation, why the deforestation? The deforestation, it means simple form. If we have to consider about the deforestation means clearing the forest and using that land which is generally acquired by the forest for the specific purposes. So trees in the forest that cut from the specific purposes, like procuring the land for the cultivations, what we have to discussing in the recent, like buildings, the houses and factories, making furnitures as a wood as a part of the fuels, and the specifically forms we have to be considered like this what we have to be considered formations implementations. This type of resources is a part of the configurations and a form. So this type of the consequence of the deforestations are going there. So most of the humans they hunting and killing the animals which are killed for their meat, skins and other part of the use of their bodies, which should be reductions in their numbers. Habitat deforestations is also we can, like due to the deforestations, industrializations, constructions of dams, natural disasters such as the earthquake, floods, droughts, cyclones, large number of the habitat of the living organisms that have been destroyed. So this is generally called as a loss of biodiversity. So what are the causes, if we have to be seen like consequence of the deforestation, or what is the causes of the deforestation? So having to be learnt about the causes of the loss of biodiversity का जो loss होता है उसके बारे में अगर हम implementations करें, so you can now easily understand कि in case of the deforestation, forests are one of the important natural resources in the recent times. Most of the revenue that government that can be collected from the forest. So however, due to this type of the various humans activities and the forest that should be under having the great cut, like constructions of house and habitats, using wood for the papers and furniture, these are generally a parts of the causes of the deforestation. So what do you mean by the consequence of the deforestation? Deforestation का consequence क्या हो सकता है उसके बारे में अगर हम discussion करें तो, so here is let's see that Paheli and the Bujo recalled the consequence of the deforestation
by remember that deforestation increase the temperature and pollution level onto the earth, because trees are one of the natural resources which can be implement the maintaining the level of oxygen and carbon into the atmosphere. So while increasing of this type of the level of carbon dioxide into the atmosphere, if we are cutting more and more trees, it cannot be absorb the CO2. So while increasing the carbon dioxide gases into the atmosphere, it also causes the greenhouse effect. Also the temperature that can be heated, so level of water that can be gets lowered. Water जो है vapor के form में release होगा और environment में निकलेगा. So deforestation that make the disturbance into the nature. So they were be told by the implementation that trees are one of the important medium to be implementation to the fertility and making the soil fertility to carrying the water here. So there will be increase of the some of the chances like the natural climates is there, floods is there, drought is there. So this type of the formations will generally help to maintaining the balance of the atmosphere. Also plants that can be absorbs the carbon dioxide gases into the atmosphere, and implementations increase the specific level of the areas in which we have to be considered that they are mostly be considered to be a implementation of the CO2 gases. So whatever the deforestations that creating, these are the generally a part of the consequence. So deforestation that generally adverse effect of the biodiversity to be checked immediately. So let us we have to be considered that biodiversity is the specific formations. We already discussing about the plants and animals depend on each other. Plants and animals, they are generally dependent onto the each other, because whatever the plants they have to be implemented, the animals that can be used as a part of their food, like a producers and the consumers. So a number of species of the birds of as well as the plants and animals which is generally living into the forest. Different type of species of animals, plants and birds which is generally live into the forest according to their habitat. So whatever the destruction of this type of forest has been affected to the food chain of the ecosystem, because they are generally interdependent to the each other. So it will be also cause the effect of their food chain into the atmosphere. Also because of the cutting of forest, the absorption of the carbon dioxide that will be lead and implementation of the CO2 that will be increased into the atmosphere. So also it will be create the effect of the water. So rainfall also may be reduced, because if the water that do not get the properly, so rainfall also be reduced, and it will be also create the effect of the droughts. So the level of carbon dioxide when it should be into atmosphere, it should be increases. That is also be effect of the deforestation. Okay, so reduce the number of trees. It should be also be increase the carbon dioxide into the atmosphere. So it may be create the global warmings like a global problems. So habitat destruction is one of the most important factors that should be implemented into the wildlife today. Also, so deforestation is also be creating the major cause which leads to the change in the soil properties. जो उसकी soil की properties होती है like fertile soils. So affected the physical properties of soil that also be get to be plantations and the vegetations. So it may be also create the soil erosions problem. So soil erosions also be implemented like changes of the soil formations. It may be expressed into the lower formation of earth. So gradually the fertile land get converted into the deserts. That process is called as the desertification, right? So deforestation is also one of the important factor to lead to decrease the capacity of soil to absorbing or holding the water. So movement of this water from the soil surfaces into the ground, that should be other properties like creating the floods. Okay, so the other properties of soil like the nutrient contents and the textures also change because the deforestation. So these are the generally a part of the deforestation formations. Now next, as a result of this deforestation, like we have also been discussing, is fertile land that should be converted into the desert, that is called as desertification. So already as a result of the deforestation, like ground waters that should be level, it should be lowered, and it will be creating the situations, maybe drought and floods, it should be creating the formation. So these are generally a consequences of the deforestation. So in which also we seen that trees are mostly cut as a part of the industries for the paper industries.
So we have to be mostly use the recycles of the papers, because recycling of paper, so paper is generally made from the pulp of trees. जो पेपर है वो कहाँ से बनता है? इट इज मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ ट्रीज. सो कैन यू इमेजिन कि हाउ मेनी लैक्स ऑफ ट्रीज that should be cut by preparing of this type of the papers, so which are students that should be used. So latest you have to be used the various papers formations into the different days. So what we have to make ki write both side of the papers, avoid wastage of the papers, also mostly use the recycle of the papers. So recycle papers that can be used minimum 5 to 7 times for its better use. So recycling help to save the energy, save the water which is needed to the manufacturing of the papers. Moreover, it can be also save the trees, because the papers industry is mostly dependent onto the trees. So if we consider as a forest and the wildlife, so now having bigger effect about the deforestations, that two students which are worried about the, and they are discussing about their professors about the how we can be save the wildlife, that should be implementation ki how we can be save the wildlife formations. So here we can be seen that one is the part is seen in your textbook like biosphere. Biosphere is what? Biosphere is that part of the earth which living organism exist. देखो अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं. एटमॉस्फेयर होता है, लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर होता है. एटमॉस्फेयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द ऑल दिस टाइप ऑफ गैसेस आर इम्प्लीमेंटेड. सारे गैसेस वहाँ पे होते हैं. तो बायोस्फीयर हमारे एनवायरनमेंट का ऐसा रीजन है जहाँ पे वाटर, लैंड एंड एयर बोथ आर अवेलेबल. सो बायोस्फीयर इज दैट रीजन ऑफ द पार्ट वेयर the living organism that can be easily exist, and supporting of all these equipments they will be get it from the biosphere. So the biological diversity is already have this cells refers to the variety of organisms that living onto the earth with their different type of the interrelationship with their environment and the other beings. So that is called as a formation. So different type of the areas, if we consider according to the biospheres, the animals which can be living into the formations, and different areas which can be implemented. So to protect this type of the species, maybe that may be in a plant or maybe in a formations of the animals, there is a specific formations there. So there is also a formation that is called as a flora and fauna. So the terms flora which is used inside of the different plants growing in a particular area, that is called as a flora. Okay, so protect our flora and fauna specific for their habitats. So we have to create the specific areas where this type of the living organisms that can be easily available, that is called as like sanctuaries, national parks and biosphere reserves, that can be implementation from creating their landmarks of the plantation cultivations and the fleeing areas of the hunting, poaching, which all are provided there. So the terms flora is that formations where the different plants which can be growing in a specific areas, and the animals which is found in the specific areas, that is called fauna. Flora is generally implemented as a part of the plants, and fauna is the implementation as a part of the animals. So these are the parts of the plants and animals which can be easily implemented into the specific areas, which can be considered as a flora and fauna. So wildlife is what? It is the used to describe the organisms. Maybe it should be used the plants as well as the animals. तो वो दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए ये नेचुरल हैबिटेट्स का यूज किया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के टर्म्स जो है लाइक सेंचुरीज का फॉर्मेशंस होते हैं, नेशनल पार्क्स के फॉर्मेशंस होते हैं, और बायोस्फीयर्स का रिजर्वर्स जो होते हैं उनके फॉर्मेशंस होते हैं. तो सेंचुरी क्या है? सेंचुरी इज द दैट काइंड ऑफ द एरियाज वेयर एनिमल्स दे कैन बी इजीली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनी डिस्टर्बेंस. नेशनल पार्क से होता है, नेशनल पार्क भी ऐसा एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ दे कैन बी फ्रीली यूज देयर हैबिटेट इनटू द नेचुरल रिसोर्सेज. और बायोस्फीयर रिजर्वर्स भी ऐसे ही होते हैं कि लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड जो कंजर्वेशन होता है स्पेसिफिक इस तरह के वाइल्ड लाइफ प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो इस तरह के बायोस्फीयर रिजर्वर्स के अंदर यूज किए जाते हैं. सो एनिमल्स एंड द प्लांट्स दे हैव बी इजीली प्रोटेक्टेड इन द स्पेसिफिक एरियाज विच इज कॉल्ड एज अ फॉर्मेशंस ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्वर्स. तो देखो ये जो बायोस्फीयर्स जो होते हैं, ये जो बायोस्फीयर हम किसको कहते हैं? तो बायोस्फीयर जो ऐसा पार्ट है जहाँ पे लाइफ जो है इजीली सपोर्टिव जो सिस्टम है लाइफ को वहाँ पे मिलता है, तो वो क्रिएट करता है इकोसिस्टम को. तो इकोसिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं,
जिसके साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कंपाउंड्स है लाइक सॉइल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, सारे जो हैं एक स्पेसिफिक एरियाज के अंदर अगर वो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं देन इट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड एज अ फॉर्म टू बी अ क्रिएटिंग टू द इकोसिस्टम। तो उसको हम इकोसिस्टम से कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है फॉरेस्ट के फॉर्मेशंस के अंदर, तो हम देखते हैं कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्वर्स क्या काम करते हैं। तो अभी हम बायोस्फीयर रिजर्वर्स एक स्पेसिफिक एरियाज होता है जो कंजर्वेशन किया जाता है, लार्ज एरिया विच इज जनरली हैव टू बी कंजर्व्ड टू बी इम्प्लीमेंटेशन टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एज यू वी अवेयर अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीके के जो स्पेसिफिक एनवायरमेंट इकोसिस्टम उसके साथ वो डील करते हैं। So biodiversity is generally a variety of plants and the animals and the microorganisms which are generally found into the specific areas, वो biodiversity होता है। तो उसके अंदर ये जो organisms रहते हैं they generally maintain the specific habitat, their cultures and the specific formations to the areas। तो ये जो biospheres होते हैं which generally helps to maintain them, कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्वर्स होता है कि मेंटेन करने के लिए उनका जो कल्चर है, उनका जो स्पेसिफिक एरियाज है उसको मेंटेन करता है। ऑल्सो दे हैव बी कंटेंट टू अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। तो अलग अलग तरीके के ऐसे बायोस्फीयर रिजर्वर्स है, जैसे एक दिया है पंचमढ़ी बायो रिजर्वर्स कंसिस्ट 1 नेशनल पार्क नेम सातपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरीज एंड पंचमढ़ी। तो ऐसा एक स्पेसिफिक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको पंचमढ़ी कहते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्वर्स जो है वो कंटेन करता है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है सातपुरा और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कंसिस्ट करता है जिसका नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। तो ये सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं वो काम करते हैं अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के फॉर्म में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको कंजर्व करने के लिए इस फॉर्मेशंस के अंदर। तो अभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके के प्लांटेशंस होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो स्पेसिफिक एरियाज के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जैसे सॉइल लाइक टीक है, मैंगो है, जामुन है, फॉर्म्स है, अर्जुन है, ये सारे जो हैं ये फ्लोरास के फॉर्मेशंस में आते हैं। दो फौनास विच आर द एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में जो दिख रहा है विच जनरली आर द एग्जांपल्स ऑफ द फ्लोरास एंड द फौनास, ठीक है। तो ये उसके एग्जांपल्स में हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखो तो ये जो फॉरेस्ट जो होता है फ्लोरा एंड फौना के अंदर, जो बायोस्फीयर रिजर्वर्स के अंदर ये होते हैं, वहाँ पे इस तरह के जो एनवायरमेंट्स के अंदर जो ट्रीज होते हैं या एनिमल्स होते हैं इनसाइड द फॉरेस्ट, वो अपने नेचुरल हैबिटेट्स को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सो टिपिकली अगर आप देखेंगे फ्लोरा एंड फौना दैट शुड बी इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द बायोस्फीयर। तो ऐसे जो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफली जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीसीज है या फिर जो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम मोस्ट ऑफली जो होता है इस तरह के सिचुएशंस जो है उनका हम यूज करते हैं। मोस्ट ऑफली दे आर जनरली यूज एज अ पार्ट ऑफ द स्पीसीज। तो उसमें हमें देखना है कि एंडेमिक स्पीसीज हम किसको कहते हैं। देखो स्पीसीज में अगर देखो प्लांट्स और एनिमल्स, the species of the plants and animals which are found exclusively in a specific particular geographical area nowhere else, तो वैसे स्पीसीज को आप एंडेमिक स्पीसीज कहोगे। तो अभी क्या होता है कि ऐसे स्पीसीज जो हमें अर्थ के किसी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन पे ही हमें देखने को मिले, बाकी और हमें कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, उसको हम एंडेमिक स्पीसीज में कंसीडर करते हैं। लाइक जाइंट पांडा, जाइंट पांडा जो है एक तरह का एनिमल है विच इज फाउंड इनटू द साउथ वेस्ट चाइना, वो वहीं पे पाया जाता है, उसके अलावा वो किसी भी लोकेशंस पे पाया नहीं जाता है। लाइक हमारे कंट्री के अंदर देखिए जैसे एशियाटिक लायंस है जो हमारा गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर है, वहाँ पे इस तरह के एशियाटिक लायंस होते हैं। और उसके अलावा हम अगर डिस्कशन करें तो नीलगिरी तहर जो है, नीलगिरी के हिल्स वो हमारे कंट्रीज के अंदर है। उसके अलावा लायन टॉल्ड मॉक्यूज जो साउथ वेस्ट जो इंडिया के अंदर है। ऐसे बहुत तरह के एंडेमिक स्पीसीज होते हैं जो स्पेसिफिक लोकेशंस के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये जो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, हाउ दे कैन बी बिकम्स एंडेमिक, बिकॉज द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंजेस, ये सारे जो फॉर्मेशंस होते हैं वो आपके एंडेमिक स्पीसीज में कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि ऑल दिस एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, a particular type of animal or plant that should be endemic to a zone, state or country। जैसे अभी मैंने बताया कि स्पेसिफिक एरियाज के अंदर ही अगर वो पाए जाते हैं तो वो एंडेमिक स्पीसीज में कंसीडर किए जाते हैं। उसके मैंने अभी आपको एग्जांपल बताए कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मेशंस, लाइक जैसे एंडेमिक फ्लोरा दिया है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर,
बाइजन्स, एक इंडियन जेट स्क्विरल है, एक फ्लाइंग स्क्विरल है, एंडेमिक फौनास के फॉर्म में एरियाज में फॉर्मेशंस में वो रह सकते हैं। सो दीज आर जनरली ये जो एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं इस तरह के जो लाइक जायंट स्क्विरल, ये जो टॉल प्लांट्स है, दीज आर जनरली पार्ट ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज जो स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही पाए जाते हैं। तो स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस व्हिच कैन बी कैपेबल फॉर द इंटरब्रीडिंग, यानी अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करना, वो उसका स्पीसीज होता है। लाइक एनिमल्स के स्पीसीज में बहुत देख सकते हो, तो नंबर ऑफ स्पीसीज दैट कैन बी फर्टाइल एज अ पार्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज, नॉट टू बी अदर। तो जो स्पीसीज होते हैं ना वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं, दे जनरली हैव टू बी शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी सीन इनटू द फॉर्मेशंस ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक जो है आपका एंडेमिक स्पीसीज के बारे में था। दिस शुड बी कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज। चलिए, अभी एंडेमिक स्पीसीज के बाद हम डिस्कशन करते हैं एक्सटिंक्ट और जो दूसरे होते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, लाइक एक्सटिंक्ट एंड द एंडेंजर्ड स्पीसीज, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया एंडेमिक स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच जनरली हैव बीन लॉस्ट फॉर एवर आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट, जो हमेशा के लिए खत्म हो गई है उसको एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। लाइक यू वुड हर्ड अबाउट द डायनासोर्स विच आर द एनिमल्स विच वंस डोमिनेटेड ऑन टू द अर्थ। So dinosaurs become extinct and they could not been adapt this changes of climate. Climate changes की वजह से वो extinct हो गए, पूरे के पूरे उनकी species खत्म हो गई है। Like the bird dodo, dodo जो bird होता है becomes extinct due to the excessive hunting by the humans. Humans ने उसका इतना ज़्यादा hunting किया कि that should be आप वो देखने को नहीं मिलते। Amongst like plants में जैसे नीलगिरी हॉलीज है या क्राई पैंसीज है, ये सारे जो है वो extinct plants में consider किए जाते हैं। फिर endangered क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज हम किसको कहेंगे? तो अमोंग्स्ट द स्पीसीज विच आर जनरली हाईली रिस्क टू बी बिकम एक्सटिंक्ट, ऐसे हाईली रिस्क पे हैं जो एक्सटिंक्ट होने की तैयारी में है, उसको हम एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। दे आर जनरली कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो सच स्पीसीज नॉट लाइकली टू बी सर्वाइव इन अ कैजुअल फैक्टर्स बट दे आर कंटिन्यू टू बी ऑपरेट, इफ दे जनरली बिकम्स एक्सटिंक्ट इनटू द नियर ऑफ टाइम्स, तो दे आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। लाइक एशियाटिक लायंस इज अ पार्ट ऑफ द एंडेंजर्ड, क्रोकोडाइल्स है, ब्लू व्हेल्स है, ऐसे सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर जनरली एंडेंजर्ड स्पीसीज। इन फ्यूचर में वो खत्म हो जाएंगे, वो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो एक इसके लिए हम देखते हैं कि एक रेड डेटा बुक करके एक वर्ड यूज होता है कि रेड डेटा बुक इज अ सोर्स which generally provide a record of all the endangered animals and plants. सारे जो endangered animal, plants और एनिमल्स और है उनका पूरा डेटा जो है रेड डेटा बुक के अंदर होता है, और ये जो पब्लिश्ड होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको इसको पब्लिश करता है और उसके बारे में वो इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो ऐसे सारे एनिमल्स को रखने के लिए एक स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जिसको हम प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक फ्लोरा एंड फौना विच दे आर हैविंग टू बी हैबिटेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरिया, जिसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो 1972 डिक्लेयर किया गया था उसके अकॉर्डिंग टू सारे ये जो वाइल्ड लाइफ प्लांट्स और जो एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेशंस बनाया गया था जिसको प्रोटेक्टेड एरिया कहा गया था। अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड कंजर्वेशन ऑफ यूनियंस, प्रोटेक्टेड एरियाज आर द एरियाज which generally have to be dedicated to the protections and the maintenance of the maintaining of the biodiversity of the natural resources and the cultural resources। तो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आप देखिए जैसे नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्वर्स आते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके के फॉर्मेशंस आते हैं। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द स्पेसिफिक एरियाज विच फॉर द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ एनिमल्स ओनली। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं जहाँ पे वी हैव टू प्रोटेक्शन ऑफ द सुटेबल कंडीशन फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, केवल एनिमल्स के लिए ही होता है। सो दिस टाइप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विच इज मोस्ट ऑफली implemented for the animals. So in the sanctuary, the different type of activities to be allowed on the extent of this not affected the wildlife, like harvesting of timber, plant cutting वहाँ पे भी चल सकता है, collection of the minor forest products, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आपको मिलती है उसका कलेक्शन कर सकते हैं। सेंचुरीज के अंदर इस तरह का फॉर्मेशंस आप कर सकते हैं, दे हैव टू बी अलाउड। सो एनिमल्स
which also are protected in the zoo. The protection in the zoo is not a adequate and comparable protection for the given into the centuries. So it is particular, even the protected forests are not safe because people living in the neighborhood from enrich upon the specific activities. So some of the threatened like a black buck है, white elephant है, गोल्डन कैट है, पाइथन है, राइनोक्सोस है, इंडियन सेंचुरीज के अंदर आप देखो तो यूनिक लैंडस्केप होता है जिसका लेवल्स काफी ब्रॉड होता है, माउंटेन फॉरेस्ट या ऐसे फॉर्मेशन में बिग रिवर्स के अंदर इस तरह के फॉर्मेशंस किए जाते हैं. सो दैट इज अबाउट द सो ऑलवेज बी वी इम्प्लीमेंटेशन वी सी दैट वी आर मोस्टली विजिटेड इनटू द जूज. सो जूज आर मोस्टली फॉर्मेशंस की हम उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें तो जू के लिए वो हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. तो जू is generally animals for kept as a public exhibition. Zoo के लिए अंदर जो हम animals रखते हैं, they most ofly implementation by the exhibitions for the public. So they live into the artificial environment. They are not into their natural habitat. This type of animals which are living into zoos, they are generally living into the artificial environment and given food as a specific time of intervals in a day. But in a sanctuary, the animals live in their natural habitat. सेंचुरीज के अंदर वो नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर रखते हैं एंड दे कैन ऑब्टेन देयर फूड एज अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ देयर ऑन. वो अपना फूड खुद ऑन कर सकते हैं. सो दिस आर द इफेक्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. अगर उसके बाद अब नेशनल पार्क के बारे में अगर डिस्कशन करें, सो नेशनल पार्क में आप देखिए तो जैसे बहुत अलग अलग तरीके के फॉर्मेशंस में नेशनल पार्क्स होते हैं. So an area which is strictly reserved for the prohibitions or protections of the wildlife animals is called national park. तो ऐसा एरिया जहाँ पे स्ट्रिक्टली रिजर्व रखा गया है जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो होता है नेशनल पार्क. नेशनल पार्क जो होता है दैट प्रिजर्व्स द फ्लोरा फौना लैंडस्केप, जिसको नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं, एंड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एरियाज. हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन लाइक एक्टिविटीज लाइक गेजिंग है, हंटिंग है, फॉरेस्ट्री है, कल्टीवेशन है. दिस टाइप ऑफ द एक्टिविटीज आर बैन्ड इनटू द नेशनल पार्क. नो प्राइवेट ऑनरशिप इज अलाउड इनटू द नेशनल पार्क. तो सातपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. द फाइनेस्ट इंडिया टीक इज फाउंड इनटू द फॉरेस्ट. ठीक है, ये जो फॉर्मेशन होता है वो आपका नेशनल पार्क के बारे में है. उसके बाद दिया है कि रॉक शेल्टर्स विच ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सातपुरा नेशनल पार्क. These are the evidence of the prehistoric human life in these jungles. मैंने आपको बोला कि हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी वो जजमेंट देता है. तो रॉक पेंटेज विच आर फाउंड इनटू दिस शेल्टर्स, अबाउट द 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इनटू द पंचमरई बायोस्फीयर रिजर्वर्स. तो स्टिल इनका इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन द पेंटिंग्स. मेनी ट्राइबल स्टिल लाइव्स इन दिस एरिया. तो ऐसे जो ट्राइबल एरियाज के अंदर जो रहते हैं स्टिल दे आर लिविंग इनटू दैट पर्टिकुलर एरियाज. सो दैट इज अबाउट द वाइल्ड लाइफ. ठीक है, सो वाइल्ड लाइफ के अंदर आप देखिए तो वन ऑफ द स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपीयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, उसमें दिया है कि सातपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक सेंस टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर. वंस अपॉन टाइम द एनिमल्स लाइक लायंस, elephants and as well as the wild buffaloes and the barasingas which is given into your figure, which is seen into your textbook, which is generally having into the Satpura parks. So these are generally a part of the endangered species. ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे endangered species के formations में किए जाते हैं. ठीक है, उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत तरह के ऐसे एरियाज है जो इम्प्लीमेंटेशन किए गए इस तरह के वाइल्ड लाइफ फॉर्मेशंस के अंदर, तो वो एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड के फॉर्मेशंस में हम कंसीडर कर सकते हैं. सो एनिमल्स मोस्ट आर एंडेंजर्ड, वो एक्सटिंक्ट के फॉर्मेशन में हो सकते हैं. जैसे आप देखिए एट द टाइम वी किल स्नैक्स, फ्रॉग, लिजर्ड्स, बैट्स रदरली विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इनटू द इकोसिस्टम. अगर आप इसको खत्म करते हैं, इनका रोल जो इकोसिस्टम का है धीरे धीरे खत्म होने लगता है. ठीक है, तो ये दो चीज के बारे में आपने डिस्कशन किया. इकोसिस्टम क्या है वो भी मैंने आपको पहले समझा दिया कि इकोसिस्टम जो है वो सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, लिविंग या नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मेशन जो होता है वो इसके अंदर कंसीडर किया जाता है. रेड डेटा बुक भी क्या है वो भी मैंने आपको पहले समझा दिया. रेड डेटा बुक जो होता है वो कलेक्शंस जो होते हैं सारे जो एंडेंजर्ड प्लांट्स और स्पीसीज के बारे में जो होता है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन में दिया जाता है. फिर उसके बाद अभी एक टॉपिक और भी मुझे समझाना है जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स. अभी बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स इज अ लार्ज मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया. एक काफी बड़ा मल्टी प्रोटेक्टेड एरियाज होता है जो कंजर्वेशन के लिए यूज होता है वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज के लिए, और पीपल्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर दिस रिसोर्सेज.
तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का क्या हम देखें कि क्यों डेवलप किया था, व्हाई इट शुड बी डेवलप। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, मेंटेन कल्चर एंड द स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरियाज, permit the tribals and the other peoples who are living nearby process, they can be do their specific activities। तो बायोस्फीयर रिजर्वर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक दे कंटेन करते हैं अलग अलग तरीके के नेशनल पार्क सेंचुरीज उसके अंदर होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पंचमरी बायोस्फीयर जो है वो कंसिस्ट करता है नेशनल पार्क जिसका नाम है सातपुरा नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसका नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अलावा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्वर्स है जिसके 2 नेशनल पार्क हैं, जिसके बंदीपुर नेशनल पार्क है और एक नागराबल नेशनल पार्क के फॉर्मेशन में यूज होता है, जिसको नागरा हॉल नेशनल पार्क भी कह सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेशन होता है। अभी आता है माइग्रेशन के बारे में। अभी माइग्रेशन टॉपिक जो दिया है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि जनरली मेकिंग, एक माइग्रेटिंग मतलब जुड़ना, दैट इज द पार्ट ऑफ द माइग्रेशन। तो एक जगह से दूसरे जगह अगर आप फॉर्मेशंस करते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स के अंदर आप मूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ माइग्रेशन। तो माइग्रेटरी जो एक जगह से दूसरे जगह जाके आए हैं वो बर्ड्स दैट शुड बी फ्लाई अवे फ्रॉम द एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर बिकॉज द क्लाइमेट चेंजेस। जैसे अभी आप यहाँ पे जामनगर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक लैक है जहाँ पे फॉरेन के बर्ड्स आते हैं, द्वारका की तरफ जाते हैं वहाँ पे इस तरह का लैक है जहाँ पे फॉरेन के बर्ड्स आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ क्लाइमेट चेंजेस they generally have to be niche becomes very cold and inhabitated, so bird they have to be cover a long distance to reach another land is called as a migratory birds, they have to be generally implement as a part of the migration। ठीक है, वो माइग्रेशन के फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन होता है। उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या है, कि क्यों उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर्स के लिए इफ यू सीन अबाउट द कटिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेपर्स तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो थोड़ा सा फॉर्मेशन जो होता है वो टफ हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक सिंपल हमें वर्ड समझना है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये वर्ड लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट में 1973 के अंदर। दे हैव लॉन्च दिस वर्ड 1973 टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन अवर कंट्री। जो टाइगर के स्पीसीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का फॉर्मेशंस का यूज किया गया था। द टाइगर पॉपुलेशंस इन अवर कंट्री हैज बीन डिक्रीज in a specific formation of slightly over the years and years, but recently times it can be increased. So realizing of this declaration of the project tiger which can be launched by the government in India, at that present there were the 47 tiger reserves and 18 Indian states which generally having to be tiger conservation। तो टाइगर्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए टाइगर्स रिजर्व्स जो है इंडिया के अंदर बनाया गया है, जिसमें आप देखिए तो पाकी है, मानस है, बांदीपुर है, बांद्रा है, पलामू है, ऐसे अलग अलग तरीके के फॉर्मेशंस उसमें बनाए गए हैं। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स तो हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में डिस्कशन किया है। लास्ट टॉपिक जो हमारे चैप्टर का है दैट इज अबाउट द रिफॉरेस्टेशन। देखो रिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, तो रिफॉरेस्टेशन मतलब रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रीज। जो ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गए उसके अकॉर्डिंग टू हमें नए ट्रीज को वहाँ पे ग्रो करना है, दैट इज कॉल्ड एज द रिफॉरेस्टेशन ऑफ द ट्रीज, जिसको हम रिफॉरेस्टेशन के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। सो वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी एज ट्रीज एज वी कट। जितना आपने ट्रीज को ट्राई कट किया है तो ट्राई करें कि उससे आप उतना ज्यादा ट्रीज को आप प्लांटेशन करें। तो प्लांटिंग ऑफ द न्यू ट्रीज where the forest have been destroyed is called as a reforestation। नए प्लांट्स को वहां पे इंप्लीमेंट करना दैट इज कॉल्ड एज अ रिफॉरेस्टेशन। सो इट डिस्ट्रॉयज द फॉरेस्ट एरियाज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ओके, तो इफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एरिया इज बी लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन टेकन प्लेस, वहां पे रिफॉरेस्टेशन फिर से जनरेटेड होता है। सो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन के अंदर देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमंस, वो अपने आप वहां नए प्लांट्स जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। बट it is necessary to each and every peoples to at least grow one plant as a part of the reforestation। so reforestation वो naturally भी होता है और humans उसको generate भी कर सकते हैं as a specific। so in India according to the act deal with the conservation of the forest conservation जो 1918 के अंदर था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वो 1972 के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। ये दोनों एक्ट के दो मेन काम थे, टू मेन पर्पस, कि टू प्रिजर्व एंड कंजर्व द फॉरेस्ट और दूसरा टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग नियर अबाउट द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी हो सके, और जो हमारा कंजर्व है और प्रिजर्व करना फॉरेस्ट को वो हमारा मेन काम होता है। ऑल्सो ऑल द गवर्नमेंट मेकिंग ऑल द इफेक्ट्स एंड एफर्ट्स टू सेव द फॉरेस्ट
So we have to be deforestation goes illegal in the recent of times. So it is our duty to help the government to save the forest as we're creating more and more trees. So that should be creating the reforestation, which also making the green wealth of the future generation, making the atmosphere very clean, making the balance of the atmosphere. These are the generally main purpose of the reforestation. Clear? So I hope that whatever we discussing on the today's lecture, that is enough and easily understandable by you. Okay, what is called as the deforestation, what is called biodiversity, what is the cause of the biodiversity, what is called as the extinct species, endangered species, and the formations of the red data book, and what is called flora and fauna, in which we're discussing about the protected areas, in which national parks, sanctuaries, and the biosphere reserves. At the end of the time we're discussing about the recycling of papers and the reforestation. Clear? So I hope कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा. So इसके जो भी क्वेश्चन इज द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, just try to yourself and write the answers in your own words. Till the students, take care. Once again I request you to don't go outside your homes. Also avoid to go into the crowded places. Still revising more and more topics according to this by using the digital mediums of learning. Once again students, take care and bye.